हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है। Welcome back, everyone. For our next session, we are privileged to have Professor Iqbal Sheikh Sir, Assistant Professor, Civil Engineering Department, VIT Sindri. He has done his BTech from VIT Sindri in Civil Engineering and MTech from IIT Roorkee in Hydrology. His specialization includes in fields like hydrology and water resources engineering. His past teaching experience includes teaching experience at CIT Ranchi and DEC Dumka. He has organized many workshops and seminars in Civil Engineering Department, VIT Sindri. Sir will be discussing the application of RS and GIS. So please welcome Iqbal sir. Thank you, Jagriti and Ayush. अनम्यूट करो ये प्रेजेंट हो रहा है ना, इसका माइक कहाँ है? नहीं होगा, एको करेगा पूरा। हाँ, एक सर को
Can you hear me? Am I audible to you? Can you hear me? Hello. Sir, you can start now. Okay, okay. Thank you, Gautam. So, on the fourth day after lunch session, I'm starting with the practicals on georeferencing, digitization, contouring, land use, land map creation. In these 3.5 days, I think we have learned some of the tools, and we have seen interface of the GIS. Uh, what are the tools we have learned till now? Uh, can you remember? Name some tools what you have used in practicals till now. Uh, we have used uh, clip tool, extract by mask tool, IDW interpolation tool, mosaic tool. We have used mosaic tools also. So these are the some tools we No, have sir. used. We'll use some other tools also in today's practical. We'll see one by one. I have shared my 3 practicals on each computer. You may see on your desktop on the computer in the file name ARSGISR 2024. You all may see that folder. In that folder, there are 3 practicals are there. Are there? Yes, sir. It's there. There is a file ARSGISR. Yes, Open sir. that. In that, there are 3 practicals. Yeah. On that, uh, for doing the practical, I have attached the data required for that practical also. So, practical 1, we'll start from practical 1. What is that? Practical 1 is georeferencing and digitization using ARCGIS. Means you have a image or existing map with coordinate system. Okay, georeferencing mean connecting an existing map or image to GCS system or projected coordinate system. And then after giving the coordinate values to the image, existing image or map, we'll extract that map that will that we can show in any report or presentation with coordinate values in GCS system, or it may be projected coordinate system or UTM system. Okay. So first of all, when you open ArcGIS, have you seen it is blank screen, and you can see here in the right bottom corner, what is it is showing? In the right bottom corner, this one, it is showing some units with unknown units. When you will open ArcGIS first time, it will show like this, some units but in unknown units, some values with unknown units, because we have not added any layer, any data. When we will add some data with some coordinate system, it will automatically show here the data is connected with which coordinate system. Are you getting my point, what I'm saying? Is it Yes, clear sir. to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So now for the first practical,
open that practical one Word file. With the help of that Word file, we can do the georeferencing and digitization with the help of ArcGIS. The step-by-step process is given in that Word file. So we'll together we'll do georeferencing and digitization. So first of all, what we have to do? First of all, we have to add the image file in practical one. You connect your folder with this practical ARSGIS. First of all, if the folder is not connected with your ArcGIS, go here, connect to the folder, that ARSGIS folder. Can you do that? Yes, sir. Okay. After connecting that folder, go to that folder by browsing only. Okay. And in practical one, you can see that there is an image with name 2024. Add that image in ArcGIS platform. Okay. Have you done? Have you Yes, sir. added the 2024 image to the ArcGIS platform? Yes, sir. Now you may see in the right bottom corner what units is showing here. It is in decimal degree. Can you see that? Decimal degree? The units for this raster data is showing in decimal degree. Means it is in GCS system. Okay. You can see by right click on this layer in the table of contents in the left side of the display. In the table of contents, click on 2024, right click. You go to the properties, go to the properties, go to source. You can see here the coordinate system given to this image. Okay. In some case, if we add some new data, new shape file, new raster data, or new image, initially the coordinate system is not connected with that. So for that, what we have to do, we have to define projection for that image. It may be shape file, it may be vector data, raster data. So first of all, you have to define the projection. For that, there is a tool, define projection, with name define projection. For the tools, I'm saying one thing. In previous version of ArcGIS, like 9.123, the ARC catalog and ARC map were different. You have to open ARC catalog in another window and ARC map in another window. But now in this 10 point version, it is in ARC catalog is in also in with the ARC map. You can see here in the right side, it is ARC catalog. If you cannot see here ARC catalog, go to Windows. There you can see catalog. Click on that. It will come to just right side. Okay. So in the catalog, you go to toolbox. There are many toolboxes. Okay. Some that is system toolboxes. There are many toolboxes in which only some tools we may use in hydrology calculation or remote sensing application in our civil engineering field. There are many tools. Okay. So what you can do, there is another my toolbox is there. You can copy the tools you regularly use, frequently use. Like I have done this. Like clip, you go, if you don't know
where is the clip? You have to search frequently. So go to clip. If I don't know where it is, go to clip. It is in data management tools. Okay. If you right click on this clip data management tools, you will see locate in catalog. Then it will show you that where that tool is. What can you do? You can copy this tool. You can copy this tool. Okay, copy that tool and just paste on the toolbox of your own. So in this way, I have copied the tools I regularly use. So it is easier for me to search the tool what we'll use. Now we'll start georeferencing. Georeferencing. First of all, we added the layer that is image of Haridwar district. You can see here in the image, it is in the legend. The green color square buttons are cities. These are showing cities: Roorkee, Mangalore, Luxor, and Haridwar. Blue color lines, polylines, is showing canals, and red colored polylines are showing road. So what we have to do, we will have to georeference or digitize. You have to create a map with this image. Okay. So first of all, you cannot see here georeferencing. You have to add that. Just right click on the blank space, and go to georeferencing. You can see here, just left click on that. Now georeferencing tool is added here. Can you see here? Georeferencing tool is added here. Okay. Now with this georeferencing tool, we will create a map of this image. Go to these icons. You can see add control points, auto registration, viewer, view link table. First of all, you have to go to view. What you have to do? View link table icon. View link table icon. Here it is. Can you see on your GIS? Yes, sir. Okay. So there you can see there is no point here. So first of all, you have to uncheck the auto adjust. You can see here the auto adjust is checked here. You have to uncheck that. In the practical one, it is in which point? Third point. We have to uncheck the auto adjust button. Now for georeferencing, you have to take some control points on this image, of which you know the value of coordinate. Like this point, Sir, we know the excuse me, sir. Sir, can you explain little bit what is georeferencing? जियो रेफरेंसिंग का मतलब हो गया, जैसे कि आपके पास एक किताब में कोई इमेज है ना, किताब में इमेज आपके पास मैप फॉर्म में है, ठीक है। अब मैप फॉर्म में है, उसको रियलिटी में आपको मैप में कन्वर्ट करना है। तो जो किताब में इमेज में इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, इस तरह से दिया है। ये आपको जैसे मान लीजिए ये आपको पॉइंट से फाइल दिया है, ये आपके पास कैनल्स है, यू हैव गिवन पॉलीलाइंस कैनल से फाइल, पॉलीलाइंस रेल लाइन से फाइल, बाउंड्री पॉलीगॉन से फाइल, है ना। तो यू हैव टू क्रिएट मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सेव फाइल्स। तो
ये एक्चुअली इमेज में जो है उसको एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम देना, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम देना, उसी को जियो रेफरेंसिंग बोलते हैं। ये इमेज में है, आप उसको इमेज में आप जैसे लिए उसको जीआईएस के प्लेटफॉर्म में लेके आए और उसको एक्चुअल कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ना, दैट इज जियो रेफरेंसिंग। ठीक है, जियो रेफरेंसिंग। तो जियो रेफरेंसिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक सम कंट्रोल पॉइंट्स, इट शुड बी मोर देन 4, है ना। जितना पॉइंट्स आप ज्यादा लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी देगा। इफ आई सिलेक्ट मोर देन 4 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स, it will be more accurate. Your RMS error value will be minimum. In this table there will be some uh, it will show error, है ना. If I will select more points, the residual error will be less. So I will for explaining I will only select 4 points here, like this point. First point is this one. I know the coordinate of this point is how much? Its longitude value is, you can see here, it is 78 degree 20 minute 0 second and 29 degree 30 minute 0 second in north. It is longitude means x coordinate, latitude means y coordinate. Okay. So the coordinate of this point is 78 degree 20 minute 0 second and 29 degree 30 minute 0 second. So if we have selected this in setting, like here you can see it is showing in decimal degree. Decimal degree. You have to convert this. It is in degree minute second. 78 degree 20 minute 0 second means 78 degree point how minutes? 20 minutes mean 20 divided by 60 is 1 by 3. 1 by 3 degree, na? 1 by 3 means how much? 0.33. It means 78.33 degree. In decimal degree, we can see this equals to 78.33 eastern and this is 29.5 northern. ना यही होगा ना. तो एक कंट्रोल पॉइंट यहाँ लेंगे हम, एक कंट्रोल पॉइंट और कहीं पे आप ले सकते हैं, आप आपके मर्जी जो है 4 ले लीजिए. हम यहाँ पे 4 पॉइंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, उसका एक्यूरेट कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट वी हैव टू इनपुट हियर. आई एम डूइंग, इट विल बी क्लियर, है ना, आफ्टर डूइंग. तो आप लोग करिए मेरे साथ साथ जो है. Fourth point, go to the add control points. Add control points you can see here beside the view link table in the left side. Add control point. Click on that. Click on that. Now you can add the points. Like I have to add this point. We'll zoom first as per my feasibility. You can zoom more than it. Now I am adding this point. Just click on that point. In the middle of this point, I'm clicking on this. Okay? I have clicked once. Now I am clicking right click, right button. It will show input X and Y. It will show input X and Y. आप लोगों का आ रहा है इस तरह से? Yes, sir. ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे ग्रीन आएगा और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो इनपुट एक्स एंड वाई आएगा. Now I am clicking on input and x and y. Now we have to put the actual value of this actual coordinate value of this point. We know x value, how much it was? 78.333 na? 78.333. It was 78 degree 20 minutes 0 second. That will be equal to 78.333 degree. In y coordinate, it was in the right side 29 degree 30 minute 0 second. So it will be equal to 29 degree 29.5 degree.
So I am giving this point this value and clicking on OK. It will add here. So I have added a control point. Na? Originally its coordinate was this. Na? But after correcting, I have put the coordinate value for this point, this one, 78.33 and 29.50. In this way, I will select another 3 points, any 3 points. Okay. So you may select here, you may select here, but you have to know the coordinate values of that point. So I am selecting this point, this point. So coordinate of this value will be how much? It is 78 degree 20 minutes, 78 degree 20 minute. From bottom you can see 78 degree 20 minute. Its x value and y value is this one. 30 degree 20 minute 0 second. Again we have to put this value in decimal degree. We have to first convert this. So 30 degree 20 minutes means 1/3 degree, 1/3. 30.33 degree in y and 78.33 in x. So you can zoom this point to see clearly. Okay. Now I will another add control point here. Just click once left button, again click right button, click on input x and y, put the correct value of coordinates. It is 78.33 and its y value is how much? 30.33. In this way I have added 2 control points. Add more 2 points. आप लोग अगर मेरे साथ में चल रहे तो ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा स्लो चलना या फास्ट चलना आप लोग बोल सकते हैं हमको, ठीक है? सब कोई कर रहे हैं हमारे साथ में? कर पा रहे हैं ना आप लोग सब कोई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हेलो हाँ, सर, हमारे यहाँ जियो प्रो रिफ्रेशिंग जो टूल है ना, वो टूल बॉक्स में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर क्लिक करने का। आपने ये टूल ऐड किया यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग? टूल ऐड है, एक्टिव नहीं है। ये दिख रहा है आपको? हाँ? हाँ, हाँ, मेनू हाँ बार में सर, है आपके यहाँ पे? है सर, बट एक्टिव नहीं है। आपने इमेज ऐड किया ये वाला इमेज? सर ऐड नहीं हो रहा है सर, वहाँ टूल एक्टिव नहीं है सर, वहाँ इमेज ही ऐड नहीं हो रहा है सर। इमेज ऐड नहीं हो रहा है यहाँ ऐड लेयर करके? हाँ सर, वही जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक ही नहीं हो रहा है। इस पे हाँ हाँ, ऐड डेटा इस पे क्लिक नहीं हो रहा आपका? वो ऐड डेटा कर लिए सर, जब इमेज ऐड कर रहे हैं ना जियो रिफ्रेशिंग में, वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। ये वाला ना एक्टिव नहीं है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2024 जियो रेफरेंसिंग के बगल में? नहीं सर, नहीं वहाँ तो दिखना चाहिए ना? नहीं दिख रहा है सर। आप इसको एक बार अनचेक कर लो इस तरह से और दोबारा इसको जियो रेफरेंसिंग को ऐड करो, देखो ठीक है सर, आ रहा है कि नहीं। ठीक है सर। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट ऐड किया। देखिए आप एक चीज देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट वाज समथिंग 78.33 और हमारा एक्चुअल वैल्यू है बहुत डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन ये मे बी कि ये ऑलरेडी एक बार इस पे जियो रेफरेंसिंग हो चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई इमेज मिलेगा तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1.22 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है ना। ये वैल्यू बहुत इसमें और इसमें बहुत अंतर भी हो सकता है, ये कुछ रैंडम वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है बहुत कम अंतर है, इसका ओरिजिनल एक्स वैल्यू और हमने जो एक्स वैल्यू दिया उसमें बहुत कम अंतर है। उसी तरह से ओरिजिनल वाई वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वाई वैल्यू एंड द गिवन
actual given value is very less. So it may be very higher also. Now we have to add more 2 points. I am adding this point, so its coordinate value will be how much? Its coordinate value will be, can see here, it is 77 degree 40 minutes. Its x coordinate is 77 degree 40 minutes, and y coordinate already we know 30 degree 20 minutes. Its coordinate value is 77 degree 40 minutes, and y coordinate is 30 degree 20 minutes. So I am adding this point as a control point. Click once left button, click right, go to input x and y, put the value 77 degree 40 minutes mean 40 divided by 60 is equal to 40 divided by 60. It is 0.67 or 0.6666. Okay, and the value of y is 30 degree 20 minutes mean 30.333. At this point, another point is added here. Go to full extent, zoom this point, take this point. Its coordinate value will be how much? Its x value is 77 degree 40 minutes, and y value is, you can see here, 29 degree 30 minutes. 29 degree 30 minutes y value, x value is 77 degree 40 minutes. Zoom this point, add one more point here, left click, just right click again, input x and y, put the value of x 77 degree 40 minutes, that is 77.666, 29.500. It was 29 degree 30 minutes, so it's 29.500. Okay, now 4 points we have added here. After this, go to point 6 in the practical. Go to the point 6 in the practical, click on auto adjust. Click on just auto adjust. As you will click, you will see here, the actual point was here, the position of point was here. I am correcting the position of that point here. So there will be some residual error. In the right 2 columns, you can see here, it should be minimum. It should be minimum. So after clicking auto adjust, it will adjust the coordinate values with GCS coordinate system. Okay. ऑटो एडजस्ट किया आपने, इसमें कुछ एरर आपको दिख रहा है वैल्यूज? कैन यू सी द एरर वैल्यूज? यस सर. हाँ, इट शुड बी वेरी लेस, 0.001. ओके, हाँ कुछ बोल रहा दीपक? तो पॉज करना होगा ना सर. हाँ
Sir, Okay, I am restarting the session. We have added 4 control points. No? Now what we have to do, to go to point 7 of the tutorial. You can see after auto adjust, clicking on auto adjust, it will correct the position of the added control points. Okay.
After that, you have to go to georeferencing. Click here. You can see here, click on this georeferencing. It will show rectify. You have to do rectify. Click on rectify tools. Okay. So from here, we will get an output of corrected image, that is georeference image. So you can save your corrected output raster on your own file. Click on this output location and give some name like rectified. Okay, I am giving name rectified. You have to select folder only, na? Folder. Okay. So it is in TIFF file. You have to save in TIFF file. Click on save. After rectifying, it will just added in the table of contents. We may see it's not done. Go to georeferencing, go to rectify, click the folder on which you have to save practical one, like practical one. I'm clicking on practical one, add, and name of the file is rectified, save. Okay, so we got output raster of rectified. So you can see when you will add, click on add button, go to that folder location where you have saved rectified folder. I have saved here rectified in practical one. I will add this. Okay, if I uncheck this, go to full extent form. We can see these 4 points. Now, what you have to do, now you can see if you go to this point, I am zooming here, this point, okay, and ask with this identify point, identify the value of this point, how much? It is matching, it is matching. The value of this coordinate is how much? 70. It is showing in the right bottom corner 78.33 to 30.33. Now it is correct. You can see. Similarly, we can see this point also. The value of this coordinate. थोड़ा सा इधर उधर हम लोग क्लिक किए हैं, बट यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है 78.33 एंड 29.50. ये जियो रेफरेंसिंग केवल हुआ. अब हमको क्या करना है कि इस मैप में, रेक्टिफाइड मैप में, वी हैव टू दिस add this canals, the boundary of this Haridwar district, the railway lines in the Haridwar district, and the cities coming under Haridwar district. Okay, you have to add this also. First of all, you have to export this data.
go to second part of the tutorial, on-screen digitization. On-screen digitization using editor toolbar. You may add again here this. It is not required now, no? It is required or not? It is not required now. So you have to edit this. You have to add first editor tool here, editor tool. We are not seeing here editor tool. So just right click on the blank side of the ArcGIS. You can see here editor, where it is, editor. Click on this, just editor will come here. Okay. So you have to save this first in your export it first. No, okay. Save this in raster format. Rectified one. Folder location is in practical one. Practical one. Because it is a raster file, you have to first create a new database file. So I am creating database file in practical one, like new geodatabase. In this, I am saving the raster file as rectified raster. Oh. Add name is here, rectified raster. Save this. So this is rectified raster. Now, what we have to do? We have to add these canals and boundaries and cities in our this rectified raster. So with the help of editor tool here, we'll edit this railway line as polyline, canal as a polyline, boundary if I want, it is also polyline, close polyline, and the cities are as points. So if I start from cities, so we have to create first a point shape file. So we'll go to in catalog, in that in the practical folder, in practical one, we'll create a new shape file. Go to practical one, create a new shape file with some name like cities. It is a point shape file. Now when we will create a new file, shape file, it may be shape file or raster file, there is no coordinate system. You have to define that. You may define here, or you may define later also. So we can define here also with the help of our previous data. With the help of previous data, or we can define here also. I have added favorites coordinate system here. It is actually it is in geographic coordinate system. You have to go to first GCS system, then you have to go WGS, then you have to go to WGS 924. It is GCS coordinate system for our a study area. So you can add this also in your favorite. Add to favorite. As you will click, it will go to your favorite. So you have it will be easy to find here. Okay. So I have added here also.
or you go to that from here also. So click on this, okay, and okay. Click again, okay. So it will assign GCS coordinate system to this layer, okay, to this new shape file cities. Now if you go to this folder practical one, you can see a save file with name cities, okay. Now go to the toolbar, editor toolbar, click on this start edit, okay. What you have to edit? This new shape file. You can see here, I'm stopping here editing. If I uncheck this there is nothing in cities, no? There is no data with cities. Now we'll add the cities with existing image or map by editing toolbar. So I'm clicking editor, start editing, which I'm editing cities. So I'm adding first city, it is Haridwar. Second one is, click on that, click on Roorkee. Second point, just left click, okay. Third point, just left click on that, this, and just fourth click on Luxor. I think there are only 4 cities there, so I have added 4 cities to this city's new shape file city. सर एक बार रेक्टिफाई से सर एक बार बता दीजिए रेक्टिफाई फिर से, ठीक है। ये जैसा मैंने एडिट कर लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एडिट करेंगे, ठीक, सर सेव एडिट मैं बता रहा हूँ इसको। 4 पॉइंट ऐड करने के बाद उसके बाद ठीक है, जैसे कि एग्जिस्टिंग इमेज जो आपका है, ये वाला हमारा 2024 को मैं अनचेक कर रहा हूँ, ये नहीं दिखेगा। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ऐसे फोल्डर वाइज देख सकते हैं, अनदर फॉर विजिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ सबको ऑफ करना है, जस्ट राइट क्लिक कीजिएगा तो टर्न लेयर्स ऑन, तो सारा ऑन हो जाता है। फिर टर्न लेयर्स ऑफ करते सारा बंद हो जाता है। फिर हम जैसे मान लीजिए इस बात कर रहे थे, ये हमारा एग्जिस्टिंग इमेज था, इसको हमने जियो रेफरेंस कैसे किया? जियो रेफरेंस जो है, जियो रेफरेंस बताना कि 4 पॉइंट जब हमने ऐड किया कि इस इमेज के साथ, तो 4 पॉइंट हाँ, ऐड करने के बाद ऑटो एडजस्ट करने के बाद सर एक बार फिर से बता दीजिए। ऑटो एडजस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है। तो जैसे इस इमेज में मैंने पहले 4 कंट्रोल पॉइंट लिया, जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको पता था, है ना। ये एक लिया और जो है यहाँ पे 1.2 3 4। लेकिन जब भी आप शुरू करेंगे तो व्यू लिंक टेबल जैसे खोलेंगे तो पहले आपको ऑटो एडजस्ट ऑफ रखना पड़ेगा। यू हैव टू अनचेक दिस फर्स्ट आफ्टर एडिंग 4 कंट्रोल पॉइंट्स, है ना, एंड गिविंग टू देम द एक्चुअल कोऑर्डिनेट वैल्यू। आफ्टर दैट यू हैव टू चेक ऑन अगेन ऑटो एडजस्ट, है ना। ये जैसे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, ये इसका जो ओरिजिनल पोजीशन था वो और आपका जो एक्चुअल पोजीशन यूनिट के वैल्यू के हिसाब से दोनों आपको दिखाएगा। आप ऐसा जूम करके देखिएगा, है ना। तो ये पॉइंट था, हम करेक्ट करके ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो कितना का एरर हुआ, ये हुआ। इसके बाद क्या करना है, जैसे आप कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से आपने इसको ये किया, और इसके बाद आप रेक्टिफाई में जाएंगे, रेक्टिफाई, ठीक है। रेक्टिफाई करने से क्या होगा कि एक नया रास्टर हमारा ऐड होगा रेक्टिफाई करने से। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे रेक्टिफाई पे, क्लिक दिस, है ना, तो इट विल क्रिएट ए न्यू रास्टर। आई एम सेविंग सर ये इन फॉर्मेट में सर ये नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है। किस में एडिट नहीं हो रहा है? फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आउटपुट लोकेशन, ये नेम और फॉर्मेट, ये ना फॉर्मेट। यस सर फॉर्मेट में एडिट का मेरे में नहीं आ रहा है, जैसे फाइल जियो डाटाबेस आ रहा है।
ये जैसे मैं मेरा स्क्रीन आप देख सकते हैं, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ टिफ लिखा है यहीं पे क्या? ऐसा सर नहीं दिखा रहा है मुझे। हुँ? नहीं दिखा रहा है पे? ऐसा हुँ, आप यही वाला बोल रहे हैं ना, जो आप यहाँ नेम है आपका, यहाँ पे टिफ फॉर्मेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं। इवन जेपीजी, पीएनजी में हम सेव कर सकते हैं, टिफ में कर सकते हैं। आपका में ये नहीं आ रहा बोल रहे हैं। इसी के बारे में बोल रहे हैं ना? प्रैक्टिकल ये तो इसमें हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते, ये तो आपका ऑलरेडी ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें फॉर्मेट आप इसको आप यहाँ से इसका ये हटा दीजिए, सफिक्स हटा के देखिए तो आ रहा है क्या? नेम में सफिक्स हटा दीजिए डॉट टिफ को। अच्छा, अच्छा सर वो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा फिर भी? पहले आपको 4 कंट्रोल पॉइंट ऐड करना है, फिर ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, ये आप टेबल देख सकते हैं, टेबल उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू ये था हमारा और हम सॉरी ओरिजिनल वैल्यू ये था, हमने एक्चुअल वैल्यू ये दिया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है। उसके बाद आपको जियोरेफरेंस पे क्लिक करके रेक्टिफाई करना है। नहीं है फिर भी आपका? तो रोजी आपका ये आया? आंसर अभी तक तो नहीं आया। नहीं हो रहा इसमें? ये तो होना चाहिए इसमें, कोई इशू तो नहीं है इसमें, हो जाना चाहिए। ये आपका इमेज सिलेक्टेड है यहाँ पे 2024 वाला, या फिर इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी में आपको करना है ना। ये हमारा इस इमेज पे करना पड़ेगा 2024 ओरिजिनल पे, हाँ। देन रेक्टिफाई करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। इसको हम अपना नेम देंगे और कौन सा फॉर्मेट में सेव करना है। जनरली हम लोग आरजीएस में टिफ फॉर्मेट में ही रास्टर को सेव करते हैं, कोई भी रास्टर, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेव करना है, तो ये सेव करने पे क्लिक, एक नया रास्टर हमारा बन जाएगा फिर। और किसी का आया है ये वाला? किसी का प्रॉब्लम है और बाकी लोगों का? सर आप कंटिन्यू कीजिए सर, हम पूछ लेते हैं किसी से। आसपास में किसी का ऐसे दिक्कत है और सबका हो रहा है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। यस सर, हो रहा है। 338 हो रहा है, प्रॉब्लम है कि यस हो रहा है, चल रहा है? यस सर, और सारे में तो चल रहा है। चल रहा है तो मैं भी अच्छा मैं देख लूंगा रोजी फिर आपका, है ना, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एक बार बाद में। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, तो अब जो है एडिटिंग करना है। जैसे मान लिया हमने बताया आपको कि मैंने सबको टर्न ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ करने पे आपको कोई भी लेयर नहीं दिखेगा, यू कैन नॉट सी एनी लेयर। इफ यू चेक ऑन द सिटीज, इवन now I have added with editor tools these 4 points. Which 4 points? These 4 cities. Now we can see 4 points in cities. Can you see here after editing? सिटीज को कोई आपने एडिट किया, कोई सिटीज को दोबारा बता दो उसको? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। फिर मैं बता दूं, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू गो टू योर फोल्डर वेयर यू आर वर्किंग on this. You have to create a new save file. Just right click on this and just right click on this, go to new, go to save file, go to save file. Okay, I'm creating a save file with name city. Now it is city means point save file ना, point save file रखना। और इनिशियली क्योंकि हम इसको डिफाइन करें तो इसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। मैं और एक तरीका बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो और एक टूल्स का यूज हम लोग सीख लेंगे।
मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम टू दिस सिटी सेव फाइल. जस्ट क्लिक ऑन ओके. आई एम क्लिकिंग ओके. यहाँ पे आपको पूछेगा, कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं है, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया. अगेन आई एम गिविंग माय कंफर्मेशन ओके. इस जैसे मैंने अभी नया जो सेव फाइल क्रिएट किया ये है ना. आप देखिएगा इस पे आप राइट क्लिक कीजिए, जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जो सिटी है राइट क्लिक कीजिए, तो इस पे आपको सोर्स पे जाइए, तो इसका देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, अनडिफाइंड है. यू कैन सी बिकॉज मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने दिया नहीं अभी तक. लेकिन जब मैं इसको क्रिएट किया था तो इनिशियली कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया था, तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखेगा GCS 1984. इसलिए मैंने नहीं किया कि आपको एक टूल का यूज सिखा देंगे. ऐसे अगर कोई भी मतलब ये है डेटा है रास्टर या वेक्टर, उसमें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया हुआ है, इनिशियली इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है. यू हैव टू डिफाइन दैट यूजिंग द टूल डिफाइन प्रोजेक्शन. यू सर्च हियर ना, डिफाइन प्रोजेक्शन. Click. You can see here in data management tools. If you click right button on this and go to locate, you can see where the tool is present. It is in data management tool. Go to projection transformation, then define projection. Double click on this. Select input raster for which you have to define the projection. I'm defining here for city. Now we have to define the coordinate system. Just click on this hand button. I'm clicking here and I'm giving my coordinate system. You have to go to this, for this you have to go to GCS system, then again wall, then again 1984. But I have added here in my favorite, so I'm adding from here. Click GCS WGS 1984, click on OK. Now click on OK. Okay. Just wait to complete. Now the projection has been given to this CT save file. Okay, I'm clicking right click on this CT profile. I'm going to source. Now you can see, can you see that projection is given here? The coordinate system is GCS WGS 1984. In this way, you can define later also. If there is no coordinate system connected with any raster or vector, with the help of define projection tool, you can add coordinate system to that data. Okay, so I have defined CT. Now you can see, if I unchecking all but only checking CT, there is nothing in CT. Okay, nothing city. With the help of this existing image, I will add 4 cities. For that, you have to go to editor tool. If you cannot see this editor, just click on the blank side of the display and you can see your editor. If you click here, you will see editor will come here. So go to editor, start editing. I will edit which one? I will edit cities. City, where it is, editor, stop editing, start editing, city. Click on this city. Now first I will add this point, edit Haridwar city. Second is Roorkee. Third is this one. Fourth is Luxor. I have edited 4 points. There are no points to edit. So I will go to editor, save edit first, then stop edit. Now, if I uncheck this existing image, and I can see that the 4 point save file, that's showing cities of Haridwar district is showing here. So I have added 4 cities. In this way, I have to add canals, railway lines. So for that, first of all, you have to create new save file, like I have created for cities.
So for canals, we have to create a polyline shape file. Go to the folder, again right click on this, create new shape file, create new shape file, name it like I'm editing now. I will go to edit now canal. So I'm giving it canal. Canal is not points, it is polyline. So you can define your coordinate system here. Click on edit, click on the coordinate system and click on OK. Now it will ask a shape file with the same name is exists. So I have to give another name. I am giving canal 1. So okay. Now you can see canal 1, this one is added. No. And this one canal in the table of contents. In the table of contents, we also see canal is added. Now, if I uncheck this city, okay, and uncheck the another data also, there is nothing in canal. There is nothing in canal, but we have to add this. So, with the help of existing image, go to editor tool, start edit. We have to add this polyline. Right? So click on canal. So I will start from this side. You may start from this side, you may start from this side. Okay, I am starting from this side. What you have to do, you have to just click on these points. It is polyline, so it will create a line. Click, click, click. अब जितना जूम ज़्यादा करोगे इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा. इस तरह से आपको क्लिक करके लाइन ड्रॉ करना है. मैं थोड़ा सा फास्टर कर रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा अभी एक्यूरेसी नहीं देख रहे हैं. ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हैं. आप ये माउस के हेल्प से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, है ना. और हम इसको देखिए आगे बढ़ सकते हैं. मैं जूम इन कर रहा हूँ अभी, आप इस तरह से बढ़ सकते हैं. अगेन मैं जूम आउट कर ले रहा हूँ, फिर इस तरह से मैं जूम इन करूँगा आगे की तरफ. ऐसे बढ़ सकते हैं. ये हमारा कैनल्स जो ब्लू लाइंस दिखा रहा है ये कैनल्स हैं. ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम. मैं ऐसे थोड़ा जल्दी कर ले रहा हूँ इसको. इस तरह से जूम इन जूम आउट, इधर जूम इन कर ले रहा हूँ. फिर क्लिक करते जाइए. इस तरह से पूरा लाइन जो कैनल दिख रहा है आपको, कैनल पे इस तरह से आपको जो आप जितना जूम करके पिक्सल पे क्लिक कीजिए उतना एक्यूरेसी होगा. इस तरह से आपको करना है कैनल के दूसरा एंड तक. इस तरह से बढ़ते जाना है. आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ? कैनल एडिट कर रहे हैं आप लोग? सर टूल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा. कौन सा टूल? सर ड्रॉ करना. जो मेरा जो इस तरह से आ रही है वाला. यस जैसे आप एडिटर टूल पे गए थे. यस सर. ठीक है, मैं इसको कंप्लीट इसको कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कर दूँगा. जैसे एंड पॉइंट पे हम डबल क्लिक कर देंगे ऐसे 2 बार, तो ये खत्म हो जाएगा. अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ. अच्छा, एक नया हम बनाते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन का बना. ध्यान से दोबारा देखिए. ये तो हो गया आपका कैनल का ना. सिमिलर वे में रेलवे लाइन भी आपका क्या होगा? पॉली लाइन ही होगा. अभी आप देखिए ये कैनल जो है एडेड हो गया. मैं अगर इस इमेज को हटा दूं, ये कैनल्स आ गया ना. पॉइंट कैनल्स का पॉली लाइन क्रिएट हो गया. और सिटीज में देख सकता हूँ, सिटीज भी यहाँ पे है. ठीक है, ये कैनल्स हो गया. अब जो है मैं आप जो रेलवे लाइन को करके दिखाता हूँ. तो गो टू द फोल्डर प्रैक्टिकल 1, क्रिएट रेलवे लाइन के लिए कौन सा सेव फाइल होगा? न्यू सेव फाइल, नाम देते हैं रेलवे.
है ना, लाइन। ये फीचर टाइप क्या होगा रेलवे लाइन के लिए? पॉलीलाइन, पॉलीलाइन ही होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप, हाँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आप एडिट कर सकते हैं, एडिट कीजिए, डिफाइन कीजिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम सेव फाइल बना रहे हैं, नया डेटा, क्लिक ओके पे कीजिए। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रेलवे लाइन को जैसे करेंगे वैसे ही आपको कैनल का भी करना है। तो आपको क्या करना है, एडिटर टूल पे जाना है। आप पहले मैप में देख लीजिए कि रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ गुजर रहा है। रेलवे लाइन जो हमारा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। रेड कलर वाला रेलवे लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। रोड है, रोड, सॉरी सॉरी, ये रोड है, ठीक है, ये आपका रोड है, नॉट रेलवे लाइन। तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, आप डिलीट कर सकते हैं। और नया हम इसको बनाएंगे, नया सेव फाइल, इसका नाम होगा रोड। सेव फाइल, name it as road. I am giving road 1. Polyline feature, giving the coordinate system GCS WGS 1924. Click on OK. Now अभी आप देखिएगा रोड जो हमने इस पे ऐड किया, इस पे अभी कोई भी फीचर नहीं है, ब्लैंक है अभी, ठीक है ना। अब हमको एडिट करके लाना है। तो जैसे मान लिया हम पहले यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहले कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू एडिटर टूल, क्लिक ऑन स्टार्ट एडिटिंग, क्लिक ऑन स्टार्ट एडिटिंग। एज विल क्लिक, है ना, देयर यू कैन सी द रोड सेव फाइल इज सीइंग हियर। Click on this. After clicking on road 1 or road you have given name, है ना, after clicking on this the editing will start. The ये क्या बोलते हैं इसको, आपका एरो जो है बदल जाएगा, ये है ना, पॉइंटर जो है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं इस पे, तो ये आपका एडिट नहीं होगा। फिर जैसे अब मैं देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये आगे बढ़ने लगता है। दूसरा सेकंड पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है आप लोग का अभी? यस सर। अभी हो रहा है ना? यस तो सर। ये पहले आपको जो यहाँ पे रोड दिख रहा था, इस पे पहले क्लिक करना था, फिर जाके ये इस तरह से आएगा, ये बिना क्लिक के नहीं आएगा। फिर इस तरह से हम रोड को ऐड करते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट किया हमने, थोड़ा सा मैं अभी सीधा ही कर लेता हूँ फास्टर के लिए, ऐसे ऐसे करते जाइए। पहले मैं इस पार्ट को कर लेता हूँ, अब इसको जूम इन जूम आउट करके अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये रेलवे लाइन एक ही है, मैं एक ही करके दिखाता हूँ, फिर बाद में आप लोग उसको कर सकते हैं। चलिए मैप इसके बाद फिर कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा इसके साथ। मैप में कैसे इसको दिखाना लेगेंड के साथ, वो आपने एक बार देखा भी है। तो इससे क्या है कि आपको दोबारा करने से फिर याद हो जाएगा वो। ये रेलवे लाइन हो गया, तो बहुत बहुत लंबा है जी। ठीक है, मैं इसको लास्ट पॉइंट में कनेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और जो है आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन सेव एडिट, स्टॉप एडिट। नाउ यू कैन सी आई हैव सॉरी रेलवे ना, रेलवे road. So I have added this portion, you can see, uncheck this image. Now this portion of road is added in this road shape file, है ना। आप बाकी पोर्शन को भी फिर से आप क्या कर सकते हैं, एडिटर पे क्लिक करके, जैसे मैं इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ इसके साथ, थोड़ा सा इसको भी कर दूँ। अगेन एडिटर पे जाइए, स्टार्ट एडिट कीजिए, मैं रोड को अभी एडिट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और ये फिर जो है ये पोर्शन को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है।
आई एम क्लिकिंग, है ना, डबल क्लिक ऑन दिस पॉइंट। सो ये पोर्शन भी ऐड हो गया, तो क्लिक ऑन सेव एडिट, क्लिक ऑन स्टॉप एडिट। नाउ यू कैन सी 2 रोड्स कनेक्टिंग जो है, यू कैन सी, ये आपको दिख रहा होगा, क्लिक ऑन फुल एक्सटेंड, देखिए ये रोड ऐड हो गया नहीं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे आप कैनल मैंने इसी तरह से एडिट किया था, और फिर ये सिटीज़ ये छोड़ दीजिए, जो मैंने बाद में एडिट किया सिटीज़ है। आप इसको जो है अपने हिसाब से ये शो कर सकते हैं, जैसे कि आप रोड्स जो है आप जैसे इसका जो इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको किस हिसाब से आपको दिखाना है, हाईवे इसका थिकनेस क्या रखना है, लाइन का आप रखिए, ओके, है ना। फिर मैं कैनल्स को जो है किस तरह से दिखाऊं, आप इसको दिखा सकते हैं, अगर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है लिगेंड में आप उसको दिखा सकते हैं। लेट्स से इट इज़ है ना, नेविगेबल रिवर जो है, आप इसको थिकनेस डिफाइन कीजिए, टू इसको ओके क्लिक कीजिए, तो अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। सिटी इसको आपको किस शेप में दिखाना, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जस्ट इसका पॉइंट्स पे, है ना, आप इसको सर्कल दिखा रहे हैं, स्क्वायर दिखा रहे हैं, किस कलर में दिखाना है इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, ओके, ठीक है, इस तरह से हो गया, है ना। तो इस तरह से ये इमेज से एक्चुअली जो है ना, ये हम लोग जैसे क्यों करते हैं, जैसे आपको जैसे इसका सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोग्राफी मैप होगा, है ना, या आप जो है गूगल अर्थ प्रो से आप इमेज वहाँ से कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो वो इस तरह से ही रहता है, इस तरह से इमेज रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहता है, लेकिन आपको एक्चुअली उस पर एनालिसिस करना है तो आपको जीआईएस प्लेटफॉर्म में पहले उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस इमेज के हेल्प से मैंने सिटी, रोड, कैनल इसको एडिट किया, ऐड किया, ठीक है ना, तब उस पर आप फिर काम कर सकते हैं। अब जो है ये 3 चीज़ ऐड हुआ, मैंने ये बाकी वाला रोड का पोर्शन ऐड नहीं किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। अब जो है इसको मैप में प्रोजेक्ट करना है, जो आपने ऐड किया मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ अभी, केवल ये मैंने 3 चीज़ सिटी, रोड, कैनल, इसको मैप में दिखाना है, तो आप इसको मैप फॉर्मेट में जाइए। तो कैसे इसको दिखाना है, आप यहाँ से जा सकते हैं लेआउट व्यू, गो टू व्यू एंड लेआउट व्यू, पॉइंट नंबर 8 ऑफ द ट्यूटोरियल, और यू मे सी हियर, यहाँ पे आप ले जाइए कर्सर को, डेटा व्यू, यू कैन सी हियर लेआउट व्यू, जस्ट सिमिलर टूल, व्यू, लेआउट व्यू, क्लिक ऑन लेआउट व्यू, है ना। तो ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं, तो ये एक टूल से ऐड हो जाएगा। आप इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, मैं लेआउट चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से कि इसका दूसरा फॉर्मेट में दिखाना है हमको। आप देखिए इस तरह से बहुत सारा फॉर्मेट है, कौन सा करना है। मैं लास्ट वाला में वर्ल्ड वाला है, इसी में वर्ल्ड में एशिया वाला फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट में मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको क्लिक कर दिए, फिनिश कर दीजिए, इसे कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका, ये हो पा रहा है लेआउट फॉर्म में, ये आया, करेंगे सर, रिपीट करेंगे। मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेआउट व्यू में यहाँ पे दिख रहा है मेरा कर्सर जो है आपको, इसको मैं जस्ट इसका लेफ्ट में डेटा व्यू में क्लिक करता हूँ तो वापस उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ये इसको क्लिक किया मैंने, जस्ट इट विल कम इन ओरिजिनल फॉर्म, है ना। अगेन, तो अगर आपको लेआउट फॉर्म में जाना है, ठीक है, तो व्यू में जाइए, लेआउट व्यू में जाइए, क्लिक जैसे कीजिएगा तो ये आया, ये जैसे बाय डिफॉल्ट ये आया। आपको ये फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ पे चेंज लेआउट है, इस मैप फॉर्मेट में आपको दिखाना है। बहुत तरीका होता है दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का। आप जैसे ये फॉर्मेट है, इसमें इतना सारा है ना, तो आप जनरली हम लोग ये वाला फॉर्मेट चूज करते हैं, वर्ल्ड वाला जो है, इसमें asia.mxd है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको जैसे क्लिक किए फिर आप फिनिश, क्लिक ऑन फिनिश, तो ये फॉर्मेट इसका है, ये फॉर्मेट है। तो इसमें जैसे लिगेंड्स वगैरह ऑलरेडी ऐड हो गया, इसको मैं मान लीजिए नहीं आया, ये आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, सब आपको ऐड करना है। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, जो भी है डिलीट, है ना, डिलीट, डिलीट। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेआउट मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके आप फुल एक्सटेंड करिएगा तो अपने हिसाब से लार्ज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस पर राइट क्लिक कीजिए आप, जो है जस्ट राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो इसमें
आउटलाइन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर कुछ फिल करना है, मैं वाइट कलर कर दे रहा हूँ, वाइट हुआ ना, अप्लाई, ओके। ये वाला इसका नहीं है, इसका जो है प्रॉपर्टीज आउटलाइन कलर, ये तो इसका हो गया प्रॉपर्टीज। हाँ, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। आप इसमें ग्रेड भी दे सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं। मीन्स हमको यहाँ पे जैसे मैप में देखें, इसमें इस तरह से जो इतना नॉर्थ साउथ का जो आपका ये ग्रिड लाइंस पास करता है, इसे है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस जो पास करता है, उस तरह से आप ग्रिड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करता हूँ, है ना, राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, गो टू प्रॉपर्टीज, है ना, तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। गो टू, यहाँ पे कुछ कुछ दे सकते हैं आप, फीचर कैचे है, डेटा फ्रेम है ना, एक्सटेंड जो काम का है वो लगा सकते हैं आप। ग्रिड्स हमारा काम का है, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ये आप यहाँ से कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसको डेसिमल डिग्री में या डिग्री मिनट सेकेंड, ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। अगर यूटीएम प्रोजेक्शन होगा तो मिलीमीटर सेंटीमीटर हो सकता है, और जीसीएस में होगा तो डिग्री मिनट सेकेंड हो सकता है, ठीक है। ग्रिड्स आप डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हम न्यू ग्रिड्स पे क्लिक करते हैं, ग्रिड्स पे क्लिक करने के बाद न्यू ग्रिड्स पे जाते हैं, तो न्यू ग्रिड्स पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए, एज जैसे वैसे ही रहने दीजिए। आप इसको कितना मिनट या कितना डिग्री पे लाइंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मैं 10-10 मिनट पे लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, 0 डिग्री 10 मिनट, 0 डिग्री 10 मिनट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको मेजर लाइंस माइनर लाइंस जो है किस तरह से रखना है, जैसे आप इसको देखने के बाद इसको पहले ओके करते समझ में आएगा। क्लिक फिनिश और अप्लाई। आप देख सकते हैं अभी ग्रिड ऐड हो गया ना इस तरह से, है ना, ये मैप में हमारा ग्रिड्स दिख रहा है, ये जो है आपका, इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आप साइज बढ़ा सकते हैं, जो लिखा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है, प्रॉपर्टीज, इस पे जाके प्रॉपर्टीज में जाइए, कहाँ से हुआ, इसका नेमिंग चेंज करना है तो नेमिंग चेंज कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज, लेवल्स, हाँ, यहाँ से आप इसको थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ओके ओके अप्लाई, ओके, है ना, अब अच्छा से क्लियर दिख रहा है। ये जो आपका है 77 डिग्री 10 मिनट्स लॉन्गिट्यूड का है, ये 77 डिग्री 30 मिनट का है, ये 20 मिनट का है, क्योंकि मैंने 10-10 मिनट्स पे मैंने ग्रिड्स बनाया है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो और भी कुछ आपको ऐड करना है, लाइक जैसे स्केल ऐड करना है ना, डायरेक्शन ऐड करना, नॉर्थ डायरेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। स्केल जो आपका आएगा, इंसर्ट लीजेंट ऐड करना है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को ऐड करना है, तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसको नेमिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम दिखा रहे हैं क्या, कुछ लिखते हैं हम, है ना, फीचर ऑफ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है, मान लीजिए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार, आप अप्लाई कीजिए तो इस पर जो चेंज हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। आप इस पर वो ऐड कीजिए, स्केल वगैरह और डायरेक्शन जो है मैप में रहता है हमेशा, आप सिलेक्शन या इंसर्ट, गो टू द स्केल बार, आप स्केल किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं आप रखिए, इस तरह से बहुत सारा स्केल फॉर्मेट है, एक चूज करते हैं, मान लीजिए चूजिंग दिस, क्लिक ऑन ओके, है ना, इट विल कम हियर, मूव दिस ऑन योर, है ना, go for showing the direction, you click on insert, click on north arrow, है ना, there are many types, है ना, you can click any one जो आपको अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए हम इसको दिखाना चाहते हैं, क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन ओके, नॉर्थ डायरेक्शन जो है इस पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें लिगेंड ऐड कर सकते हैं आप, इंसर्ट लिगेंड, इंसर्ट, गो टू इंसर्ट, गो टू लिगेंड,
आप क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये 3 चीज़, सिटी, रोड और कैनल, ये 3 चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए इधर ये 3 को जो है, अभी राइट साइड जो है इसको मैं इसको लेफ्ट साइड कर दे रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं दिखेगा। तो आप मैं सिटी क्या क्या दिखाना चाहता हूँ, सिटी और रोड 1, सिटी, रोड 1 और कैनल 1, कैनल 1, इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। अब नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, ठीक है, नेक्स्ट करते जाइए आप। ये फॉर्मेट है, कैसे दिखाना दिखा सकते हैं। तो लीजेंट हो गया है, आपको दिख गया है क्या क्या है, जो ये है दिखा रहा है, दिस इज सिटी, दिस इज रोड, दिस इज कैनल। तो ये आपका एक मैप बन गया है ना। इस तरह से हम बाउंड्री को भी अगर एडिट करके ऐड करते और बाकी अदर्स रोड्स को दिखा सकते थे तो एक कंप्लीट मैप बन जाता। ठीक है, ये जियो रेफरेंसिंग और डिजिटाइजेशन इस तरह से करना है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है समझने में कहीं पे? नो सर। एक्चुअली मैंने ट्यूटोरियल इस तरह से बनाया आप लोगों को कि आप खुद जो है उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। कैसे आपको कौन सा टूल में जाना है, किस पे क्लिक करना है, मैंने उस तरह से बनाया है। आप अपने से भी इसको ट्यूटोरियल्स को अपने लैपटॉप में लेके आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। किन्हीं को कुछ पूछना है? नो सर। तो ये प्रैक्टिकल्स आपको देखिए, आप कहाँ तक कर पाए हैं इसको कंप्लीट। आप जैसे प्रैक्टिकल्स के ऊपर में आपका लिखा हुआ है जियो रेफरेंस प्रॉब्लम इज जियो रेफरेंस द गिवन मैप डिजिटाइज इट यूजिंग डिजिटाइजेशन मेथड प्रिंट और शेयर इन योर ArcGIS ग्रुप। जो भी आपने बनाया है जहाँ तक उसको आप सेव कीजिए और सेव करके, ऐसा इसको सेव कैसे करना है, जैसे आप यहाँ तक कर लिया ना, इसके बाद यू हैव टू गो टू फाइल, यू हैव टू एक्सपोर्ट द मैप, एक्सपोर्ट द मैप, इसको एक्सपोर्ट कीजिए आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कैसे सेव करना है। आप PDF में सेव कर सकते हैं और अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं PDF में सेव करना चाह रहा हूँ या फिर इमेज फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, जैसे करना चाहते हैं आप। प्रैक्टिकल 1 में हम इसका नाम दे रहे हैं, इट इज़ हरिद्वार, हरिद्वार डिजिटाइज्ड। ठीक है, क्लिक सेव। तो ये हमारा PDF फॉर्मेट में सेव हो गया। आप उसको जो है इस पे जाके देख सकते हैं, ये हमारा ये फाइल था ना हरिद्वार डिजिटाइज, तो ये हमारा मैप बनाया था। तो इस तरह से ये गिवन इमेज है ना, टोपोग्राफिक इमेज हो गया या फिर क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलेशन सर्वे करके जो इमेज सर्वे करते हैं उसका जो ड्राइंग्स होता है उसको GIS प्लेटफॉर्म में कैसे इसको एनालिसिस करना है। एक्चुअली टोपोग्राफिक मैप जो बनता है सर्वे ऑफ इंडिया का, वो ट्रायंगुलेशन सर्वे से ही करते हैं वो, तो उनके पास जो टोपोग्राफी मैप होता है उसको आपको GIS पे लाके इस तरह से आपको जियो रेफरेंसिंग डिजाइनिंग करना है, उसके बाद आगे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फाइल्स जो है आप इसको सेव करके अपने नाम और फाइल नेम देके आप इसको प्रिंट करके दिखाइए या फिर आप ग्रुप में डाल सकते हैं। सब कोई, सारे कोई के लिए आप लोग जहाँ तक भी किए इसको एक मैप फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करके सेव करिए और इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्रिंट तो नहीं होगा सबके साथ, वहाँ प्रिंट नहीं कर सकते हैं आप, इसको सेव करके व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है ArcGIS वाला, उस पर आप शेयर करिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा देर में 5 मिनट दे रहा हूँ, आप शेयर कीजिए। मैं थोड़ा सब कोई करो इसको कंप्लीट। ठीक है, इसको शेयर करो सेव करके इस तरह से। ओके सर।